Mr. Justice Amin-ud-Din Khan, Mr. Justice Syed Hasan Azhar Ravi, 4P, Civil Petition number 2148-L, 2022 against the judgment dated the 15th of April 2022 passed by the Lahore High Court, Lahore in Civil Revision number 2108 of 2014. Muhammad Riaz. Petitioner versus Muhammad Altram etc. Respondents for the petitioner, Mr. Muhammad Jawad Zafar, ASC through a video link from Lahore. For the respondents, Mr. Haroon Dugal, ASC. CH. Akhtar Ali, AOR. Date of hearing, the 25th of January 2024. Order Amin-ud-Din Khan, J. Through this petition filed under Article 185, 3, of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. 1973 leave has been sought against the judgment dated 15 C. 4.2022 passed by the learned Lahore High Court whereby Civil Revision number 2108 of 2014 filed the petitioner was dismissed. 2. The petitioner is the vendee and the defendant in a suit for pre-emption filed by the respondent's plaintiffs. He filed the written statement and contested the suit. Both the parties produced their oral as well as documentary evidence in order to prove their respective pleadings and contentions. Following the conclusion of trial, the learned trial court dismissed the suit v. judgment and decree dated the 28th of April 2009. Appeal filed thereagainst was allowed and the suit was decreed by the learned First Appellate Court. Revision was filed by the Vendec defendant petitioner but it was dismissed. Hence, this petition. 3. After hearing the learned counsel for the petitioner, notice was issued to the other side. Learned counsel for the plaintiff's respondents is present. We have heard the learned counsel for the parties at length. Supreme Court of Pakistan. Mr. Justice Sardar, Tariq, Masood, Mr. Justice Amin-ud-Din Khan, Mr. Justice Syed, Hasan, Azhar, Reuision. Civil Petition number 2148 of 2022 फैसले के खिलाफ मोरखा 15/4/2022 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में 2014 का सिविल नज़रसानी नंबर 2018 मोहम्मद रियाज पिटिशनर व मुकाबला मोहतरमा अल्तरम वगैरह जवाब दहिंदगान। दरख्वास्त गुजार के लिए जनाब मोहम्मद जवाद ज़फ़र ASC लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए जवाब दहिंदगान के लिए मिस्टर हारून दुगल ASC चौधरी अख्तर अली AOR समात की तारीख 25 जनवरी 2024 तरतीब आर्टिकल के तहत दायर की गई इस दरख्वास्त के ज़रिए अमीन-उद-दीन खान जस्टिस इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के एंड की शिक 185 सब क्लास 3 1973 के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की गई। लाहौर हाई कोर्ट का मालूम हुआ जिसके तहत 2014 की सिविल नज़रसानी नंबर 2018 दायर की गई दरख्वास्त गुजार को खारिज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार फरोख्त कुनिंदा और मुकदमा में मुद्दा अलैन की तरफ से दायर करदा एप्लीकेशन इस तहरीरी बयान दर्ज कराया और सूद का मुकाबला किया। दोनों जमातों ने अपनी ज़बानी भी पेश की। दस्तावेजी सबूत इसके मुतल्लिक़ दरख्वास्तों को साबित करने के लिए और तनाज़ात ट्रायल के इख्तिताम के बाद ट्रायल कोर्ट ने 28/4/2009 के फैसले और हुक्मनामे के ज़रिए मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील वहाँ के खिलाफ दायर करने की इजाज़त दी गई। मुकदमे का फैसला आलम ने किया था। पहली अपील कोर्ट वेंडिंग मुद्दा ने नज़रसानी दायर की थी दरख्वास्त गुजार लेकिन इससे खारिज कर दिया गया। इसलिए दरख्वास्त नंबर 3 दरख्वास्त गुजार के वकील को सुनने के बाद नोटिस दिया गया। दूसरी तरफ जारी मुद्दा जवाब दहिंदगान के लिए सीखा हुआ वकील ने जवाब मौजूदा हमने तवील अरसे तक फ्री कैन के इल्मी वकील को सुना। अभी हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 2148-L of 2022 page no. 2. 4. The right of pre-emption is a piratical right, and
and the preemptor must prove the essential conditions for the exercise of such right in accordance with the provisions of Section 13 of the Punjab Pre-emption Act, 1991, Act 1991. It goes without saying that a preemptor, without proving the performance of Talb by Matuathabat and Talb plus Ishhad strictly in accordance with the provisions of Section 13 of the Act, 1991, cannot succeed. In the context of this particular case, the respondents, to prove the factual of Talb by Matuathabat, asserted that they received information about the sale of the suit land on the 5th of February 2004 at 12 noon through one Ghulam Mustafa while they were sitting in their house. They immediately exercised their right of preemption during the same meeting. Ghulam Mustafa, the informer, appeared as PW2 and supported the stance of the respondents by asserting that he received information about the sale of the suit land from one Muhammad Basharat who met him at Pasror on the 5th of February 2004 and thereafter he informed the respondents about it the same day. They then jointly made Tal by Mu greater than Athabat in the same meeting. However, during cross-examination, PW2, the informer, disclosed that respondent number 2, Muhammad Ashraf, announced to exercise his right of preemption 1 or 2 minutes after respondent number 1, Muhammad Akram. Admittedly, there is a delay of 1 or 2 minutes in the making of Tati Bi Matuathabat by respondent number 2. The question before this court now is whether this defect is sufficient to non-suit the respondents. 5. Explanation. 1. To Section 13 of the Act 1991 provides the definition of Tal by Mutvathabat. It states that Tal by Matuathabat means an immediate demand by a preemptor. In the sitting or meeting, Majhs, in which he has come to know of the sale, declaring his intention to exercise the right of preemption. The term, immediate demand, supra is of immense importance and remained under discussion and interpretation before this court in various cases. Particularly, a 5-member bench of this court in the case of Mian Pir Muhammad and another versus Fachir Muhammad through LRs. And others, PLD 2007 Supreme Court 302, while referring to Black's Law Dictionary, as well as various other decisions on the subject, concluded that the condition of immediate demand means that Tal by Mulathabat has to be performed in the same meeting and sitting, without any loss of time and as soon as information of the sale was received by the preemptor. The relevant paragraph of the above judgment is reproduced hereunder for convenience. सफ़ा नंबर 2 पर है। पैरा नंबर 4, प्रीएम्पशन का हक एक समुद्री हक है और पहले से इस तरह के हक को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी शराइत को साबित करना चाहिए। पंजाब प्रीएम्पशन के सेक्शन 13 के दफात के मुताबिक प्रीएम्पशन एक्ट 1991 ये कहे बगैर चला जाता है कि एक प्री तालबुल मुतवैयत और तलब की कारकर्दगी को साबित किए बगैर प्रीएम्पशन एक्ट की सेक्शन 13 की दफात के मुताबिक सख्ती से अशद 1951 कामयाब नहीं हो सकता। इस खास मामले के तनाज़ुर में जवाबदहिंदगान ने तलबिया मतवाज़ा की हकीकत को साबित करने के लिए जोर दिया कि वो सूट अराजी को फ़रोख्त के बारे में 5/2/2014 को 12 बजे इत्तला मिली दोपहर एक गुलाम मुस्तफ़ा के ज़रिए जब वो इनके घर में बैठे थे। उन्होंने फौरी तौर पर प्रीएम्पशन का अपना हक इस्तेमाल किया। एक ही मुलाकात गुलाम मुस्तफ़ा PW2 और जवाबदहिंदगान के मौक़िफ़ की तईद करते हुए कहा कि इस मौसूल हुआ है। एक मोहम्मद ने सूट ज़मीन की फ़रोख्त के बारे में मालूमात बिशारत जिसने 5/2/2024 को पसरूर में इनसे मुलाकात की और इसके बाद इस दिन जवाबदहिंदगान को इसके बारे में मुतला किया। फिर उन्होंने मुश्तरका तौर पर बनाया
इसी जलसे में तलबिता माऊता तहम करास के दौरान इम्तिहान PW2 मुखबर ने इंकशाफ किया कि जवाब दहिंदा नंबर 2 मोहम्मद अशरफ ने पहले से अपना हक इस्तेमाल करने का ऐलान किया या जवाब दहिंदा नंबर 1 मोहम्मद अकरम के 2 मिनट बाद इकरार की तत्बिया मुतवाज़ा के बनाने में 1 या 2 मिनट की तख़यीर हुई है। बज़रिया जवाब दहिंदा नंबर 2 अब इस अदालत के सामने सवाल ये है कि क्या ये ऐब जवाब दहिंदागान के मुताबिक ना होने के लिए काफ़ी है। 5 एक्ट 1991 की सेक्शन 13 की वजाहत 1 फराहम करती है कि तलब मुतवाज़ा की तारीफ। इसमें कहा गया है कि तलब मुतवाज़ा मजलिस या मीटिंग में किसी पेशगी शख्स की तरफ से फौरी मुतालबा है जिसमें इसने अपने इरादे का ऐलान करते हुए फ़रोख्त के बारे में जान लिया है। प्रीएम्पशन का इस्तेमाल करें। इस्तिलाह फौरी मुतालबा सुपरा है, इंतहाई अहमियत का हामिल है और ज़ेर बहस रहा। मुख्तलिफ मुकदमात में इस अदालत के सामने तशरीह खास तौर पर 5 मियाँ पीर मोहम्मद केस में इस अदालत के रुकन बेंच और एक और बामुकाबला फ़कीर मोहम्मद बज़रिया LR और दीगर PRD 2007 सुप्रीम कोर्ट 302 ब्लैक की लॉ डिक्शनरी के हवाले देते हुए नीज़ इस मौजू पर मुख्तलिफ दीगर फैसलों से ये नतीजा किया गया है कि इसकी हालत फौरी मुतालबा का मतलब ये है कि तलबिया मुलासबत में अदा की जाए, एक ही मुलाकात और बैठा बगैर किसी वक्त के नुकसान के, और जैसे ही फ़रोख्त की मालूमात प्रीएम्प्टर के ज़रिए मौसूल होती है मुतल्लिका मदरजा वाला फैसले का पैराग्राफ यहाँ के लिए दोबारा पेश किया जाता है। अभी हम इसके अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 2022 page number 3. 4. It is observed that great emphasis and importance is to be due to this word in making of Tati-bi Muathabat, and it is necessary that as soon as the pre-emptor acquired knowledge of the sale of preempted property, he should make immediate demand for his desire and intention to assert his right of preemption without the slightest loss of time. Emphasis supplied. 6. Later, this court in the case of Muhammad Nazif Khan Uasis Gutbat Khan and others, 2012 SCMR 235, while examining the definition of sale under Section 2D and Section 13(1) of the Khyber Pakhtunkhwa Pre-emption Act 1987 held that the preemptor is required to make talbi matuathabat immediately upon receiving information of the sale, regardless of whether the conditions laid down for completion of sale have been fulfilled. The relevant paragraph of the above judgment is reproduced hereunder for ease of reference. 7. For the purpose of exercise of the right of pre-emption, sale must be complete in all respect in accordance with its definition given in Section 2D of the Act, namely, permanent transfer of the property and payment of valuable consideration. The right, therefore, cannot be exercised until the two conditions exist. The said definition of sale becomes relevant when controversy arises as to whether or not the property in question was sold. Conferring right of preemption on the preemptor, plaintiff. The fulfillment or otherwise of the TiVo conditions mentioned in Section 2D of the Act, however, may not be retained in the context in which the word sale in subsection 3 of Section 13 of the Act has been used. The latter provision mandates the pre-emptor to make immediate demand in the same sitting or meeting in which he acquires knowledge of the sale. This stringent protection does not allow the preemptor to postpone the making of talbi murajabat in order to make further inquiry or probe as to whether or not the sale was complete in as respects. The tatibi is to be made regardless of the credibility of the information. Emphasis supplied. 7. Similarly, this court in the case of Bashir Ahmed versus Mohammed Zanlan, 2021 SCMR 134, observed that the use of the word immediate demand
in Section 13 supra is significant and cannot be undermined, and concluded that a delay of 2 hours in making the demand of tal by Matuathabat is not an immediate demand, and such delay is fatal to a successful claim of pre-emption. The relevant paragraph of the above judgment is reproduced hereunder for convenience. अभी हम इसके सफ़ा नंबर 3 पर हैं। पैरा नंबर 4 ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा ज़ोर और अहमियत है तलब मुवासबत बनाने में। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें और ये ज़रूरी है कि जैसे ही प्री-एम.आई ट्रे हासिल किया हो, पहले से खाली जायदाद की फ़रोख्त का इल्म इसे होना चाहिए। इसकी ख्वाहिश और इरादे का फौरी मुतालबा करे। कोई और किसी नुकसान के अपनी प्री-एम्पशन के हक़ पर जोर दे। नंबर 6 बाद अज़ां इस अदालत ने मोहम्मद नज़ीफ़ खान के केस में यूएस किया गुबत खान और दीगर 2012 SCMR 2353 की जांच करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के सेक्शन D2 और सेक्शन 13(1) के तहत फ़रोख्त प्री-एम्पशन एक्ट 1987 में कहा गया था कि प्री-एम्प्टर को तलब बनाने की ज़रूरत है। फ़रोख्त की इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर मुताबिक कता नज़र इसके फ़रोख्त की तकमील के लिए शर्त रखी गई है पूरे हो चुके हैं। मज़कूरा फ़ैसले का मुतल्लिक़ा पैराग्राफ ये है कि हवाला की आसानी के लिए ज़ैल में दोबारा पेश किया गया है। प्री-एम.आई के हक़ के इस्तेमाल के मकसद के लिए फ़रोख्त इसके मुताबिक हर लिहाज से मुकम्मल होनी चाहिए। एक्ट की सेक्शन D2 में तरीफ़ यानी मुस्तकिल जायदाद के मुंतकली और कीमती रकम की अदायगी और हक़ लिहाजा हक़ तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2 शराइत मौजूद हैं। मज़कूरा तरीफ़ फ़रोख्त के मुतल्लिक़ बन जाता है कि तनाज़ा पैदा होता है ज़ेर बहस जायदाद बेची गई थी या नहीं। प्री-एम्प्टर मदई पर झूठ का हक़ तकमील या दूसरी सूरत में सेक्शन D2 में मज़कूरा शराइत ताहम एक्ट के सियाक़ो सबाक़ पर रद्द नहीं किया जा सकता, जिसके सेक्शन 13 के ज़ैली सेक्शन 3 में लफ्ज़ फ़रोख्त है एक्ट इस्तेमाल किया गया है। मौखर ज़िक्र शिक इससे पहले को लाज़मी करार देती है। एक नशिस्त में फौरी मुतालबा करना मुलाकात जिसमें वो फ़रोख्त का इल्म हासिल करता है, ये सख्त तहफ़्फ़ुज़ पेशगी करने वाले को इसकी इजाज़त नहीं देता कि तलबिया मुरस्बात बनाने को मुलतवी कर दे। इस बारे में मज़ीद इंक्वायरी या तहक़ीक़ात करें या नहीं। फ़रोख्त के लिहाज से मुकम्मल थी तबा होना है। मालूमात के साख से कता नज़र ज़ोर फराहम किया गया है। नंबर 7 इस तरह ये अदालत बशीर अहमद मुकाबला केस में मोहम्मद लाल 2021 SCMR 134 ने मुशाहदा किया है कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सेक्शन 30 सुपरा में फौरी मुतालबा अहम है और नहीं हो सकता कि मजरू किया और ये नतीजा अख्ज़ किया कि बताने में 2 घंटे की तख़ीर हुई। तलबिया मुआवज़ा का मुतालबा फौरी मुतालबा नहीं है। तख़ीर पेशगी तैयारी की कामयाब दावे के लिए मुहलक है। मुतल्लिक़ा मुदरजा वाला फ़ैसले का पैराग्राफ यहाँ के लिए दोबारा पेश किया जाता है। अभी हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Number 2148-L of 2022, page number 4. 8. It would be relevant to mention here that this court before Bashir Ahmed's case Supra has already been held in the case of MST. Reuision versus Aurangzeb and others, 2015 SCMR 92, that even a delay of 10 to 15 minutes before the exercise of such right, tal by Muathabat, is fatal to the case of the preemptor. The relevant observation by this court is reproduced hereunder for ease of reference. 9. It is evident from the record that there is no dispute regarding the making of tal by Matuathabat by both respondents. However, a delay of 1 or 2 minutes surfaces in the case of respondent number 2. Upon a careful examination of the portion of the evidence of the PW2, the informer, as reproduced by the learned trial court in its judgment, it becomes apparent that respondent no.
1 initiated Tal by Mulathabat first, followed by respondent number 2. 1t can be inferred that respondent number 2 waited for respondent no. 1 to complete his declaration of Tati bi Mulathabat before making his own declaration, resulting in a brief delay of 1 or 2 minutes. We are mindful of the established principle that as soon as the preemptors acquire knowledge of the sale of the preempted property, they should make an immediate demand of their desire and intention to assert their right of preemption without the slightest loss of time. 4 inches 4. We now consider whether a 2-hour delay in making the demand of Tal by Mulathabat is fatal to a pre-EMI in suit. The explanation to subsection 1 of Section 13 of the Northwest Frontier Province Pre-emption Act, 1987 states that Tati bi Mulathabat means immediate demand by the preemptor in the sitting or meeting, majlis, in which he has come to know of the sale, declaring his intention to exercise the right of preemption. The use of the word immediate is significant and cannot be undermined. A delay QF 2 hours in making the demand of Tal by Mulathabat is not an immediate demand, and such delay is fatal to a successful claim of preemption. Emphasis supplied, LL. We find that the case of the appellant for making Tal by Mulathabat in accordance with law stood demolished, as without any justification she consumed 10 to 15 minutes to discuss the matter with her family members before taking the decision of exercising her right of preemption in respect of the suit landed. In the statute, use of the word immediate in the context of Tal by Mulathabat has its own meaning and significance. Thus no redundancy can be attributed to it to accommodate a pre-EMI tor who has not been vigilant in making such a Tal. The lapse QF 10-15 minutes before the exercise of such right FTBI Mulathabat was fatal to the case of the appellant. Emphasis supplied. सफ़ा नंबर 4 पे हम यहाँ ये बताना मुनासिब हो कि ये अदालत इससे पहले मोहतरमा के केस में, बशीर अहमद के केस में केस सुपरा पहले ही हो चुकी है। मुकाबला औरंगजेब और दीगर SCMR 2015-92 के यहाँ तक कि तख़यीर इस तरह के हद के इस्तेमाल से 10 से 15 मिनट के पहले तलबुल मुवासबत प्रीएम्प्टर के मामले में मुल्क है। इस तरह से मुतल्लिका मुशाहिदे हवाले की आसानी के लिए अदालत को यहाँ दोबारा पेश किया जाता है। नंबर 9, रिकॉर्ड से ज़ाहिर है कि कोई तनाज़ा नहीं है। दोनों जवाब दहिंदगान की तरफ से तलबिया मुतवाज़ा बनाने के बारे में, ताहम 1 या 2 मिनट की तख़यीर की सूरत में सतों जवाब दहिंदा नंबर 2 के हिस्से को बगौर जायज़ा लेने पर के सबूत जैसा कि सीखते हुए मुकदमे की तरफ से दोबारा पेश किया गया है। PW2 अदालत अपने फ़ैसले में ये वाज़ेह हो जाता है कि जवाब दहिंदा नंबर 1 सबसे पहले तलबिया अलमी शुरू के, इसके बाद जवाब दहिंदा नंबर 2 हो सकता है। अंदाज़ा लगाया कि जवाब दहिंदा नंबर 2 ने जवाब दहिंदा नंबर 1 के मुकम्मल होने का इंतज़ार किया है। इसका अपना ऐलान करने से पहले तत्वील मुतवासबत का ऐलान 1 या 2 मिनट की मुख्तसर तख़यीर के नतीजे में हम ख्याल रखते हैं कि यह असूल कायम किया गया है। जैसे ही प्रीएम्प्टर इल्म हासिल करता है कि पहले से खाली जायदाद की फ़रोख्त के बारे में इन्हें फ़ौरी तौर पर करना चाहिए, इनकी ख्वाहिश और इरादे का मुतालबा, अपने कबल अज़ वक्त की हक़ पर जोर देना, वक़्त के मामूली नुकसान के बगैर। अब हम गौर करेंगे कि आया 2 घंटे की तख़यीर हुई है। तालिब इल्मी के मुतालबा करना कबल अज़ वक्त के लिए मुल्क है। सूट सेक्शन 13 की ज़ैली दफ़ा 1 की वजाहत शुमाली मगरबी सरहदी सूबा प्री-एम्प्शन एक्ट 1987 बयान करता है। तत्वा मुतालबत का मतलब है फ़ौरी मुतालबा, बैठे या इजलास से मजलिस में पेश करने वाला जिसमें वो अपने इरादे का ऐलान करते हुए फ़रोख्त के बारे में मालूम हुआ हो। प्री-एम्प्शन का हक़ इस्तेमाल करे लफ्ज़ का इस्तेमाल फ़ौरी निशानी है, इसे कमज़ोर नहीं किया जा सकता।
तलबिया का मुतालबा करने में 2 घंटे की तख़ीर, कोई फौरी मुतालबा नहीं है। इस तरह मुताबियत तख़ीर कबल-अज़-वक़्त के कामयाब दावे के लिए मुल्क है। हमें मालूम हुआ है कि अपील कुरिंदा का मुकदमा तलबिया बनाने के लिए कानून के मुताबिक मुलाज़मत का मुज़हम करके खड़ा कर दिया गया बगैर किसी जवाब के। इसने 10-15 मिनट सर्फ कर लिए से पहले इसके घर वालों से इससे मामले पर बात करने के सिलसिले में इसकी पेशगी हक़ को इस्तेमाल करने का फ़ैसला। सूत्रा आइन में लफ्ज़ फौरी का इस्तेमाल तलब ज़ूती के सियाक़ो-सवाब के अपने मानी अहमियत इस तरह इससे कोई फालतूपन मंसूब नहीं किया जा सकता। एक प्री-एम-आई टूर को एडजस्ट करें जो कस ना रहा हो। ऐसा तालब बनाना के वक्फा मिनट पहले इस तरह के हक की मशक थी। अपील कुरिंदा के केस के लिए मुल्क है। अभी हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Petition number 2148-L of 2022, page number 5. 10. On the other hand, Muhammad Basharat Ali, from whom PW2, the informer, received information regarding the sale of the sued land, appeared as DW3 and contradicted the account given by PW2, the informer. He asserted that he did not meet the informer in Pasror on the 5th of February 2004, nor did he inform him about the sale of the sued land. We believe that the fact of the sale of the sued land is a fact that can be seen, such as by observing or taking part in the sale transaction or by seeing the sale deed or sale mutation. The person who conveys the information of the fact of sale must be a person who has observed the fact of sale, and it is he who can then pass on the said fact to another persons. Thus, the chain of information regarding the sale, starting from the very first person with direct knowledge and passing it on to the person who lastly informs the preemptor, must be complete. Only the complete chain of the source of information of the sale can establish the essential elements of Tati Bi Muwathabat, which are I. the time, date and place when the preemptor obtained the first information of the sale, and E. the immediate declaration of his intention by the preemptor to exercise his right of preemption. Then and there, on obtaining such information, reference in this regard may be made to the case of Haroon Khan vs. Irfanullah Khan, 2022 SCMR 1231. In the present case, such chain of the source of passing on the information as to the fact of the sale of the sued land has not been proved, as Muhammad Basharat Ali has categorically refused to meet and share the information about the sale of the sued land with Ghulam Mustafa, the informer. The entire case of the respondents regarding the issuance of Talbi Mulathabat built on the hearsay evidence of Ghulam Mustafa, the informer, fails to the ground due to an incomplete chain of information about the sale of the sued land. Therefore, the learned trial court correctly observed that when the source of information provided by the informer is not proved, the transmission of this information to the respondents also becomes highly doubtful. However, both the learned First Appellate Court and the learned High Court failed to take note of this important fact of the matter and set aside the judgment and decree of the learned trial court. Therefore, we feel no hesitation to hold that the respondents failed to prove the validity of Talbi Mulathabat made by them for exercising their right of preemption over the sued land. 11. Now we advertise the other important aspect of the matter. There is no cavil to the legal proposition that the preemption is a personal right and a preemptor is required to prove it through his own statement as per law declared by this court in the cases of disturb. सफ़ा नंबर 5 में पैरा नंबर 10 उसकी तरफ मुशर्रत अली जिसने सूट की प्रोसेस तलक मालूमात हासिल की। मुखबर PW2 यानी
PW3 کے طور پر ظاہر ہوئی اور PW2 کے دیے گئے اکاؤنٹس سے متصادم ہے۔ مخبر انہوں نے موقع اختیار کیا کہ وہ قصور میں مخبر سے نہیں ملے 5/2/2004 اور نہ ہی اس نے اس سود کی زمین کی فروخت کے بارے میں بتایا۔ ہم یقین ہے کہ سود اراضی کی فروخت کی حقیقت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس دیکھا جا سکتا ہے جیسے مشاہدہ کر کے یا فروخت کے لین دین میں حصہ لے کر یا دیکھ کر۔ سیل ڈیڈ یا سیل میوٹیشن وہ شخص جو معلومات پہنچاتا ہے فروخت کی حقیقت کا ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس نے فروخت کی حقیقت کا مشاہدہ کیا ہوا ہو۔ یہ وہی ہے جو پھر مذکورہ حقیقت کو دوسرے شخص تک پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح فروخت سے متعلق معلومات کا سلسلہ جو پہلے سے شروع ہوتا ہے وہ شخص جس کا براہ راست علم ہو اور اس شخص تک پہنچایا جائے جو آخر کے پری ایمپٹر کو مطلع کیتا ہے مکمل ہونا ضروری ہے کہ صرف مکمل سلسلہ فروخت کی معلومات کے لیے ضروری عناصر قائم کر سکتا ہے۔ طلب مواقبت جو یہ ہے کہ وہ وقت تاریخ اور جگہ جب پری ایمپٹر نے فروخت کی پہلی معلومات حاصل کی ہو اور پری ایمپٹر کے ذریعے اس استعمال کو اپنے ارادے کا فوری اعلان اس طرح کے حاصل کرنے میں کرے کہ وہاں ایمشن کا حق معلومات اس سلسلے میں فرید کے کیس کے حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ عطا خان بمقابلہ عرفان اللہ خان 2022 SCMR 1231 حال ہی میں کیس معلومات کا منتقل کرنے کے ذریعے کی اس طرح کی زنجیر کے طور پر سود اراضی کی فروخت کی حقیقت محمد کے طور پر ثابت نہیں ہوئی۔ بشارت علی نے ملاقات اور معلومات شیئر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ غلام مصطفیٰ مخبر کے ساتھ سود کی زمین کی فروخت کے بارے میں دی طلبیہ کے اجراء سے متعلق مدعا اعلان کا پورا معاملہ غلام مصطفیٰ کی سنی سنائی شہادتوں پر بنایا گیا۔ متعصب مخبر معلومات کی نامکمل سلسلے کی وجہ سے زمین پر ناکام ہو جاتا ہے۔ سود زمین کی فروخت کے بارے میں لہذا ٹرائل کورٹ نے صحیح طریقے سے سکھایا مشاہدہ کیا کہ جب مخبر کے ذریعے فراہم کردہ معلومات کے ذریعے سے ثابت نہیں جواب دہندگان کو بھی اس معلومات کی ترسیل انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تاہم دونوں سیکھا پہلی اپیلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ اس سے اہم حقیقت کا نوٹس لینے میں ناکام رہی۔ معاملہ اور سیکھے ہوئے مقدمے کے فیصلے اور حکم نامے کو ایک طرف رکھ دیا۔ عدالت لہذا ہمیں یہ ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ جواب دہندگان ناکام رہے۔ ان کے ذریعے مشق کے لیے بنائے گئے طلبت مستبیت کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے سود زمین پر ان کا پری ایمپشن کا حق۔ نمبر 11 اب ہم اس معاملے کے دوسرے اہم پہلوؤں کی تشریح کرتے ہیں۔ اس قانونی تجویز میں کوئی خلفشار نہیں کہ پری ایمپشن ذاتی حق ہے اور ایک پری ایمپٹر کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے اپنے ذریعے سے ثابت کرے۔ ڈسٹرب کے معاملات اس عدالت کے ذریعے اعلان کردہ قانون کے مطابق بیان۔ ابھی ہم اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ 2148-L of 2022 page number 6 Begum MST Nisar Akhtar 2012 SCMR LL06 Amin-ud-Din through LRs U Fachir Sain 2007 SCMR 401 and Abdul Kaikum U Muhammad Sadiq 2007 SCMR 957. It is on record that respondent number 2, Muhammad Ashraf, did not appear as a witness before the learned trial court to substantiate his claim, nor did he attempt to produce an attorney on his behalf. It was also not the case of respondent number 2 that he was suffering from some disability to appear before the court. Therefore, his failure to appear in the witness box would adversely affect his right of preemption. Clearly, the evidence of respondent number 2, which would have the best evidence, has been withheld by the respondents. Consequently, in accordance with Article 129 G
of the Qanuni Shahadat Order, 1984. An adverse inference can also be drawn against him. Although Respondent number 1, the other preemptor, appeared as a witness, it did not provide any help to Respondent number 2. Therefore, the suit, to the extent of Respondent number 2, is liable to be dismissed on this score too. Therefore, no partial or full decree can be passed in favor of another preemptor. 12. Foregoing in view. The learned trial court is fully justified in dismissing the suit of the respondents as they failed to prove the validity of tal by mujathabat made by them for exercising their right of preemption over the suit land. In its thorough analysis of the relevant law and available facts, the learned trial court has arrived at a sound and reasoned conclusion that is both legally sound and just. That being so, this petition is converted into an appeal and the same is allowed. Resultantly, the judgments passed by the learned First Appellate Court and the learned High Court are set aside. The court dismissing the suit is restored. And that of the learned trial Islamabad the 25th of January 2024. Mazhar Javad Bharti, approved for reporting. صفحہ نمبر 6 بیگم محترمہ نثار اختر 2012 SCMR 1106 نولاب دین کے ذریعے اور عبدالقیوم محمد 2007 SCMR 401 فقیر سائیں صادق 2007 SCMR 957 یہ ریکارڈ پر ہے کہ جواب دہندہ نمبر 2 محمد اشرف سیکھے اور مقدمے سے پہلے بطور گواہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے اپنے دعوے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے وکیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کی طرف سے یہ بھی جواب دہندہ نمبر 2 کا معاملہ نہیں تھا کہ وہ تھا کہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے کسی معذوری کا شکار، لہذا اس کے گواہ کے خانے میں پیش نہ ہونے کے اس حق پر منفی اثر پڑے گا۔ پری ایمپشن واضح طور پر جواب دہندہ نمبر 2 کے ثبوت جو ہوں گے جواب دہندگان کی طرف سے بہترین ثبوت کو روک دیا گیا۔ نتیجتاً قانون کے آرٹیکل 129 جی کے مطابق قانون شہادت آرڈر 1984 کی خلاف بھی ایک منفی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اسے اگرچہ جواب دہندہ نمبر 1 دوسرے پری ایمپٹر بطور ایک ظاہر ہوا گواہ، اس نے جواب دہندہ نمبر 2 کو کوئی بھی مدد فراہم نہیں کی۔ مقدمہ جواب دہندہ نمبر 2 کے حد تک اس پر خارج ہونے کا ذمہ دار ہے، اسکور بھی، لہذا کے حق میں کوئی جزوی یا مکمل حکم نامہ منظور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور پری ایمپٹر نمبر 12 پیش نظر میں نے سیکھا ٹرائل کورٹ مکمل طور پر جائزہ جواب دہندگان کے مقدمے کو مسترد کرنا کیونکہ وہ درست ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے ذریعے اپنے حق کے استعمال کے لیے بنائے گی طلبیہ معاوضتی کا سوٹ زمین پر خالی کرنا۔ اس کے متعلق قانون کے متعلق تجزیہ میں اور دستیاب حق سے معلوم ہوا کہ ٹرائل کورٹ ایک آواز پر پہنچ چکی ہے۔ معقول نتیجہ جو کہ قانونی طور پر درست اور منصفانہ ہے، ایسا ہونا اس درخواست کو اپیل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کی اجازت ہے۔ نتیجے کے طور پر سیکھے والے پہلی اپیل کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ مقدمہ خارج کرنے والی عدالت بحال ہو گئی اور سیکھے ہوئے مقدمے کو اسلام آباد 5 جنوری 2024 مدرجوید بھٹی۔ اس میں سپریم کورٹ کا یہ ایک جو ہے کیس ہے جس کے اندر ابھی ریسنٹ یہ ججمنٹ آئی ہے، جس کے اوپر طلب کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ طلب یہ ہے کہ جو ہے کہ جب سیل کی اطلاع دیتا ہے کوئی آ کے انفارمر، تو جو پری ایمپٹر ہے وہ فوراً اس کی آواز کے اوپر بغیر ٹائم ویسٹ کیے فوراً کہتا ہے کہ یہ زمین تو میں نے خریدنی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ اس کی بہت جو ہے نا اہمیت ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا مقدمہ دوبارہ ریسٹور ہوا۔ تو اس ججمنٹ کو پلیز پورا کمپلیٹ دیکھیں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ For the knowledge purpose, please share and subscribe to my channel for the motivation purpose. Take care and Allah Hafiz and pray for me.